Okay, so starting with the unit number one of O level Cambridge chemistry, आपके Cambridge O level chemistry GCE syllabus का according to the 2021 and 22 and till 24 syllabus. The unit number one is separation or purification, or what we also call as separating techniques or experimental techniques. It has four names. Basically आपका separating techniques आपका first unit है, then we have kinetic particle theory, then we have atomic structure, elements, compounds, mixtures, periodic table, chemical bonding, we have moles and calculations, electrolysis, rate of reaction, उसके बाद energy changes, reversible reaction, redox reactions, acid base salts, metals, air and atmosphere, and then we have our organic chemistry जिसके अंदर we will talk about macromolecules as well. So talking about separation or purification or experimental techniques, we have total of 6 techniques in your syllabus. जिसके अंदर we have filtration, crystallization, simple distillation, fraction distillation, sublimation, and chromatography. Now, when we talk about filtration, first of all, filtration हम क्यों करते हैं? Filtration by the word means we are filtering something, we are purifying something using a filter funnel या filter paper. Now, before these separating techniques, you should know कि हम कैसे दो चीजों को identify करते हैं when we want to actually separate them. Before choosing a separating technique, it is important that you look at what are those substances. Are both the substances soluble? Are both the substances insoluble? Are both the substances miscible, immiscible? मतलब वो क्या है? For example, if I talk about sugar and water mixed together, now they are both soluble substances. You cannot separate sugar from water by just using a filter paper. But what about when we talk about an insoluble solid from a solution? For example, when we talk about sand in water. Now, sand cannot mix in water. If you try to mix, वो हमेशा क्या होगा? वो नीचे जाके बैठ जाएगी. Which means that sand is an insoluble solid inside a solution. So when we have an insoluble solid, for example, sand in water, which is the solvent, तो वो आपके पास एक insoluble solution बनता है. And to separate two substances in an insoluble solution, you can use the first technique in your syllabus, that is your filtration. So in this, you can see what is the principle. You are actually performing the separation of an insoluble solid from a solution or a solvent. What is the apparatus that you will be needing? Now, by the name of filtration, you can tell that you need a filter paper and a filter funnel. ठीक है, filter funnel के नीचे आपने एक filtrate वो होगा, that is the purified substance, the substance that has already been purified, जो कि यहाँ से purify होके आ रही होगी, the soluble solid dissolved in the solid, that would be your filtrate. Here we have a clamp. The clamp and the stand are there along with the burst to help hold the filter funnel in place. ये बीच में आपके पास एक filter paper की cone लगी होती है, on which we start adding the solution. यहाँ से हम solution डालने की कोशिश करते हैं. We start adding the solution और जितना भी वो residue होता है, all the residue starts to accumulate inside the funnel. जो clean purified form of water होती है, that starts to drip down inside the beaker. Now the apparatus we need, first of all, एक limitation है इस process की. What is that? That the process of filtration cannot separate a soluble solid from a solution, and purification of river water to make it drinkable. Now limitation क्या है? That the process of filtration cannot separate a soluble salt from a solution. I just told you filtration किसके लिए है? Filtration is only there for separating insoluble solids from a solvent. जैसे कि sand हो गई, जैसे कि any type of insoluble solid, आपके पास कुछ stones हो गए, वो चीजें separate हो सकती हैं. What if we are talking about salt and water? Salt तो mix हो गया. What if we talk about sugar and water? Sugar ही mix हो गई है. Sugar water, salt water, उनको आप separate नहीं कर सकते. You cannot separate sugar from water in a solution. Now filtration के through you cannot separate a soluble solid from a solution. You can only separate insoluble solid from a solvent. One of the importance of filtration is कि हम इसको widely use करते हैं. In which applications, अगर हम इसके applications की बात करें, तो आपके घरों में पानी के फ्री फिल्टर लगे हुए हैं. वो फिल्टर क्या करते हैं? Purification of river water to make it drinkable. River water तो नहीं, खैर आपके पास अगर ground water आ रहा है घर से या डायरेक्टली किसी कैनाल के थ्रू आ रहा है, irrigation or whatever आपकी main town water supply. Importance is that filtration helps in keeping those impurities, keeping those sand particles, keeping those sedimentary particles away from the water. आपका वो water को purify कर देते हैं. So one of the applications of filtration that is very important is the purification of river water to actually make it drinkable. और फिर ये आप filter के बाद उस पानी को पी सकते हैं.
सो वी हैव, इस तरह ये आपके पास होता है। फिल्टर कहाँ पे यूज होता है? दिस इज दी होल डायग्रामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्लीकेशन। रिवर से वो जाता है फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है? बिग पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। स्क्रीनिंग के बाद होती है सेडिमेंटेशन। नाउ बाय द नेम सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल सेडिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि सैंड हो गए, सॉइल हो गए, छोटे छोटे पेबल्स हो गए, अदर इम्प्योरिटीज हो गई। वाटर इज अलाउड टू स्टे टू सेटल डेंसर पार्टिकल्स, और नीचे से आप वो फिर रिमेनिंग स्लज को निकाल लेते हैं, जो कि पीछे रेजिड्यू जमा हो जाता है। After sedimentation, we have a fine filter bed. फाइन से क्या पता लग रहा होता है? टू रिमूव फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि अभी भी सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग में सिर्फ बड़े पार्टिकल साइड में हुए हैं, जो आपके अभी भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, जो कई बार वैसे ही मुंह में आ जाते हैं पानी पीते हुए, वो कई बार सही तरह प्यूरिफाई नहीं होते। सो वी हैव अनदर फाइन फिल्टर बेड टू इवन रिमूव दोज फाइन सॉलिड पार्टिकल्स एज वेल। तो कार्बन चारकोल में क्या होता है फिर, जो फिल्टर बेड के बाद है, इन अ कार्बन चारकोल इट रिमूव्स द टेस्ट, कलर एंड स्मेल। अब रिवर वाटर आप वैसे पिए, उसकी स्मेल भी होगी, ठीक है, उसका एक अलग टेस्ट भी होगा। तो उस टेस्ट और स्मेल को भी रिमूव करने के लिए आपके पास एक कार्बन चारकोल की एक और लेयर आती है प्रेजेंट इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि उसकी स्मेल और उसका टेस्ट पानी को खत्म कर देता है। द लास्ट प्रोसेस जो कि रिवर वाटर की फिल्ट्रेशन में होता है, दैट इज टू किल द बैक्टीरिया। अब टू किल दैट बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर विब्रियो कॉर्डा टाइप बहुत से बैक्टीरिया हो सकते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है। सो वी ऐड क्लोरीन, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। बहुत से स्विमिंग पूल्स के अंदर भी क्लोरीनेशन किया जाता है, और उस क्लोरीन की बड़ी तेज एक स्मेल होती है, जो कि स्विमिंग पूल्स वगैरह के पास आती है। सो दिस क्लोरीनेशन इज एक्चुअली डन टू किल द बैक्टीरिया, ताकि यू कैन एक्चुअली ड्रिंक दैट वाटर। और उसी के बाद जब वंस द बैक्टीरिया इज किल्ड, all the water goes into a water tank, और साथ ही आपने एक वॉल्व पंप लगाया होता है that supplies the water to the town, और फिर टाउन से आपके आपके घरों में चला जाता है। So this is the process and one of the applications where filtration is actually used. तो first आपके पास क्या है? आपकी source क्या थी? River. Screening was your second step to remove the big particles. Then came sedimentation. Then came the fine filter bed, मजीद छोटे particles. Then came the carbon filter, जहाँ पे आपने taste और smell remove की. Number 6, we have chlorination to kill the bacteria. Number 7, it's finally transporting to the wall pump. और wall pump से फिर आपके घरों में वो town, कोई भी town है, DHA, वेरिया town, वो आपके घरों तक पानी को supply कर देता है। स्लज क्या है? बेसिकली स्लज यहाँ पे जो थी, स्लज की मैंने नीचे डेफिनेशन भी नोट की हुई है। व्हाट इज स्लज? Sludge is basically, it is a rich plant nutrient because it contains large amount of urea, therefore it is very important for healthy growth of plant. स्लज को, जो आपकी सेडिमेंटेशन वाला पार्ट था, सेडिमेंटेशन के अंदर आपने क्या चीजें हटाई? आपने मिट्टी निकाली है। अब उस मिट्टी के अंदर, उस खाद के अंदर, उस रेत के अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हो सकती हैं। दोज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द healthy growth of plants. That is basically the sludge, which is a rich plant nutrients, और उस sludge को आप बाद में as fertilizers भी use कर सकते हैं for the healthy growth of